मंत्र मेडिटेशन करता था। अच्छा, तो आप कैसा एक्सपीरियंस है, आप शेयर करना चाहेंगे अपने साथियों के साथ? पहले मंत्र मेडिटेशन जब नहीं करता था तब मतलब खुद को अंदर बहुत टेंशन होती थी, डिप्रेशन में चला जाता था, और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम भी आते हैं। लेकिन मेडिटेशन करने के बाद, फर्स्ट टाइम जब मेडिटेशन करता था तब भी मेडिटेशन के अंदर ही बहुत सारे टेंशन आ जाता है। हम्म, तो अब धीरे और धीरे। आप धीरे धीरे माइंड को, मतलब माइंड फ्रेश हो जाता है ये मेडिटेशन करने के बाद। ठीक है, ठीक है। गुड गुड, अच्छा है। अमित, यार अभी आप बताना चाहेंगे कुछ? मेरे को तो भैया पीसफुल लगता है बहुत। पीसफुल है, ये भी अच्छा है। रवि? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी भैया, बहुत शांतिदायक लगता है। शांतिदायक, अच्छा। और कोई बताना चाहेगा? राहुल, प्रिंस, अंकित? हरे कृष्णा भाई। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। भाई बहुत मतलब कि माइंड एकदम शांत हो जाता है, और कुछ मतलब कुछ फ्यू आवर्स तक, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरे दिन तक, लेकिन 5 से 7 से 8 घंटे तक पूरा एकदम मतलब माइंड पूरा पीसफुल रहता है। मतलब फोकस भी कर पाते होंगे स्टडीज में। हाँ, फोकस भी हो पाता है। उसके बाद जैसे ही मतलब मेडिटेशन ओवर होता है तो ऐसे लगता है कि सारा मतलब कि सारा दुख ओवर हो गया है। अच्छा, सही। तो गुड गुड। तो अपना कंटिन्यू करेंगे सर यहाँ से सेशन भगवत गीता पे। तो थैंक यू। ओके, सी, हम, कृष्ण कृष्ण। ओके, लेट मी सी, सेकंड, गिव मी अ सेकंड माय डियर फ्रेंड्स। ये क्या है? गोविंद, हो जाएगा? ओ हो। दोनों ऑन करो। हरे कृष्णा, कैन यू सी मी माय फ्रेंड्स? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हाँ, हरे कृष्णा सर। यस हरे सर। कृष्णा। ओके। बहुत ही ब्लैक ब्लैक दिख रहा है स्क्रीन मुझे। थोड़ा सा स्क्रीन रंग बिरंगा लगाते हैं, बनाते हैं। क्या क्या कर सकते हैं हम थोड़ा स्क्रीन रंग बिरंगा बनाने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? ओके, किसी किसी को हिंट मिल रहा है। थैंक यू अमित, बहुत समझदार है। अंकित, है ना? यस यस, मैं पिन करता हूँ आप लोगों को। ओके, अंकित। यस, डोंट बी शाय, शर्माइए मत, सब घर के ही हैं। Others also, please turn on your cameras. The most brave thing to do in life is first to turn on the camera. Don't worry, this is not going to be your Google Meet Delhi University online class, which is happening right now these days. Don't worry. It won't be like that, where you have to just mark your attendance and just look for something. है ना? आप लोग देख सकते हैं, you can see your brothers and you are looking so nice. I'm waiting for Akshay and Prince also. Prince Kumar Sir from Ghaziabad. Yes, and Akshay also. Dear friends, nice.
Looks like Keshav, you are on outer space journey. Wow, good, good. Hare Krishna, Rahul and Ravi, Ankit, सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं क्या एक बार? सब लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हो हरे आप लोग? कृष्णा। बढ़िया सर। बढ़िया। यस अक्षय, सर। रवि, ठीक हो? हरे कृष्णा। अनम्यूट हो रहे। यस। हाँ हाँ, अनम्यूट ही रखो, जितना हो सके हमें एक दूसरे की आवाज सुनाई दे उतना अच्छा है। सो यू ऑल डिड मंत्र मेडिटेशन, राइट? सो फीलिंग गुड? यस हाँ सर। जी। अच्छा लग रहा है? यू नो, यस सर। there are two reasons generally people come to spirituality. Either the first reason is feeling good, or other reason is feeling bad. When they are feeling good, you know, ki, wow, everything is nice, let me open up Bhagavad Gita, है ना? Then they say ki, okay, let's come to spirituality. Thank you Ankit also for turning on the camera. Please keep the camera turned on. And yes, so feeling good and sometimes feeling bad. इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो आप लोग? When they come to spirituality, when they're feeling bad, can you quote an example? ऐसा कभी होता है? हाँ हाँ, अमित कह रहे थे कुछ, बोलो। डिप्रेशन। डिप्रेशन, यस, स्ट्रेस, एंजाइटी। एंड वो कैसे होता है? स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वो कैसे आता है? एग्जाम्स, असाइनमेंट्स। आई थिंक दिस इज रेलेवेंट फॉर यू। और कुछ? यस सर। Any other sources of we have something stress and anxiety in your life? Which are the sources? करियर, यस करियर। अभी तो हम फर्स्ट ईयर में आए और अभी से ही हमें करियर की ओपिनियंस, एक्सपेक्टेशंस डाल दी गई हैं, यू नो, इन द माइंड। क्या करोगे? शर्मा जी का बेटा क्या बनेगा? है ना? देयर इज अ कैरेक्टर इन लाइफ, यू नो, द पड़ोसी वाले अंकल, ही इज ऑलवेज आस्किंग योर फादर, यू नो, आपका बेटा क्या बनेगा? है ना? ऐसे एक बार हुआ ना, मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ। ऐसे एक बार क्या हुआ कि एक फादर है, वो अपने बच्चे को डांट रहे हैं, है ना? वो स्कूल में आए और देख रहे हैं उनका बच्चा क्या, उनका बच्चा पढ़ाई नहीं करता, फेल हो गया। एंड देन वो अपने बच्चे को कह रहे हैं कि पूरी क्लास के सामने तो डांट रहे। कभी ऐसा आप लोगों के साथ कोई पेरेंट टीचर मीटिंग में आए हो, हुआ है या पता नहीं, नहीं हुआ, बट आपने देखा हो किसी फ्रेंड के साथ पूरी क्लास के सामने उसके पापा अच्छे खासा डांटते हैं। एंड वो अपनी क्लास में कह रहे हैं, कहते हैं, देख देख बेटा, देख देख, तेरी क्लास में पढ़ती है ज्योति, है ना, वो फर्स्ट आई है, देख देख। And लड़का क्या कह रहा है? उसे देख देख की तो फेल हो गया ना पापा मैं, वो फर्स्ट आ गई, मैं फेल हो गया, है ना? फीलिंग बैड, यू नो। एक बार ऐसे ही क्या हुआ, जस्ट ऑन अ फनी नोट, यू नो, एक बार क्या हुआ कि एक वाइफ और एक हस्बैंड, उनका झगड़ा हो गया, यू नो। एंड क्या हो रहा है कि वो दोनों कार पे लॉन्ग ड्राइव के लिए चलेगी कि झगड़ा शायद सुलझ जाएगा। एंड कार के बाहर वो क्या देख रहे हैं कि बाहर मैदान है घास का बहुत बड़ा, और वहां पे क्या है, डोंकीज है बहुत सारे। एंड द हस्बैंड इज सेइंग कि देखो, ध्यान से देखो, है ना, तुम्हारे घर वाले वहां पे खड़े हैं, देख लो। एंड देन वाइफ सेज, हाँ हाँ, मेरे घर वाले ही तो हैं, दे आर माय इन लॉज ना, बिल्कुल मेरे घर वाले ही हैं। तो फीलिंग बैड, एंड देन दे कम टू स्पिरिचुअलिटी कि प्रभु जी कोई गीता का सेशन चाहिए हमें, यू नो, इन लाइफ। एंड समटाइम्स, यू नो, पीपल इवन कम फॉर मेनी क्रेजी थिंग्स इन स्पिरिचुअलिटी, यू नो, मनी, मनी मनी स्वीटर देन हनी। honey. हनी। Yes, money sweeter than honey, you know. One guy, you know, one girl actually, she was around 25 years old, and she married a man of 65 years old. And then her relatives were asking, why did you marry such a, you know, aged person? Why? And then she said, पहला तो उनकी इनकम, दूसरे उनके दिन का, all profit, everything about money,
you know. So they come up to spirituality with amazing things, and I'm very astonished when people come with many things, and when they share their heart to me, they have come, looking for many things. And what to speak, of uh, many things. अगर मैं यहाँ पे अभी ऐलान करता हूँ कि भगवत गीता जो पढ़ेगा पूरी, उसे हम 10 लाख रुपए देंगे, उसके बैंक अकाउंट में हम 10 लाख रुपए जमा कराएंगे, तो देखो कैसे भीड़ लग जाएगी पूरी, सब लोग भीड़ में आ जाएंगे कि चलो 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 चलो, 10 लाख मिलेंगे भाई, 10 लाख, है ना, इतने तो हमने कमा भी नहीं पाएंगे एक साल में, आराम से मिल जाएंगे 10 लाख, भीड़ लग जाएगी, बट आई थिंक, माय डियर फ्रेंड्स, भगवत गीता उससे कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है, बिकॉज ऑल द मनी वी अर्न stays here, can't do anything. But the Gita is going to invest something in your life which you are going to carry forward throughout your journey of your soul, throughout the journey of the lifetimes. What Gita will invest in you, that will be your eternal asset. It is not going that someone will come and take it away from you. Not even Yamraj can take it away from you. It's such a special thing, Bhagavad Gita. Therefore, the need of the soul is this spirituality. It's not that, someone will come and say, I don't want to be spiritual. I don't want spirituality in my life. Just go away, man. Just get away. You know, but Bhagavad Gita says you are spiritual. It is not that you are going to become spiritual. You already are spiritual. You are a soul. It's just that you are covered with ignorance. You are covered with no knowledge of God, no knowledge about your own self. And therefore, this wisdom of Bhagavad Gita is meant for everyone. Some are aware of it and some are not aware of it. You know, आप लोगों ने मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स, है ना, उसमें आप लोगों ने सक्सेस से रिलेटेड एक बहुत फेमस डायलॉग सुना होगा। क्या डायलॉग है वो, बता सकता है कोई, क्या डायलॉग है? सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। सक्सेस झक हाँ, मार के पीछे आएगी। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। यस, 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 सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। बट आज हम देखेंगे, जो हम डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं भगवत गीता के अकॉर्डिंग, एक्चुअली में सक्सेस क्या है। एंड देयरफॉर आवर टॉपिक इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवत गीता। व्हाट इज द टॉपिक वी हैव नेम, याद है किसी को? क्या रखा है हमने टॉपिक का नाम? रीडिफाइनिंग सक्सेस। Yes, redefining success. And now you can compare कि थ्री इडियट्स वाली डेफिनेशन कितनी सही थी, कितनी गलत थी, जिसे हमने सुन लिया था, है ना, बहुत कुछ हमने सुना थ्री इडियट्स में। तो हमें हमें एक्चुअली में थ्री स्मार्ट पर्सन बनना है, थ्री इडियट्स नहीं बनना, है ना। वी वांट टू बी स्मार्ट गाइस, राइट? ओके, समवन हैज रिटन समथिंग इन, ओके, देन एक्सपेक्टेशंस डोंट कम ट्रू, या श्योर। So, तो हाँ, यस केशव, so like start principle में कोई डाउट था वो पूछ लो सर आपसे ले कभी। Okay, let's start with doubt. सर Let's एक ही go डाउट with सर एक ही this. डाउट था एक ही डाउट था। हाँ, लेकिन बोलो। सर आपने ऐसा बताया कि पढ़ाई का भी एग्जाम्स आ रहे हैं, तो सर मान लो अभी सर मुझे आज पढ़ना है, तो सर आज पढ़ाई नहीं हुई, सर बाद में ऐसा हम्म, होता है कि पढ़ाई नहीं होगी, इसका स्ट्रेस होता है, फिर वापस पढ़ाई नहीं होती है, फिर उस स्ट्रेस के हम्म, चक्कर में आगे पढ़ाई नहीं होती तो वापस उससे स्ट्रेस होता है। तो इसको कैसे सर कोप अप करें कि वो लूप बन जाता है, एक yes, स्ट्रेस हाँ, हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही, फिर वापस स्ट्रेस हो रहा है, फिर उससे स्ट्रेस हो हम्म, रहा है, उससे वापस पढ़ाई नहीं हो रही, वापस स्ट्रेस हो रहा है। तो yes, इसको yes, कैसे एक सर लूप बन वो जाता करें, है। लूप बन जाता है सर, तो उसको कैसे हटाएं? Exactly, I think you are not speaking for your own self. I think you are speaking for many others. Am I correct? Others also Yes, face sir. this challenge. यस सर। So that's a very good question that you have asked, and I think we should answer this, right? Let's check. Krishna, why this is happening? I don't know. My screen is visible or not? Okay.
Krishna, I have something. Hmm. Okay, can you see my PPT right now Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. on full screen? Yes, sir. Okay, so you are correct actually. Uh, Many times, this is the nature of the mind, that the mind encourages you to do the mistake and then later on blames you only for the mistake. And then in that regret, you again do the mistake, and then the mind again blames you only for the mistake. Therefore, I taught something in the last class to observe mind. There is a technique mentioned by our sages, our saints. बहुत सारे मुनियों ने इस टेक्निक को दिया है. How to become self-aware of the mind. That technique I shared in the last class. किसी को याद है? What was that technique? That exercise which we did. याद है किसी को? Right. Yes, journaling. We did something called as spiritual journaling. Spiritual journaling is so powerful that it will help you to first identify your mind. Most of the times, we cannot identify our mind. That's why we always get defeated by the mind. To identify the mind is the greatest step. Lao Tzu, a famous philosopher, he says, the road to success is very easy, very easy, but only the first step is difficult. That means it is sometimes difficult to just start journaling. But when you start journaling in the association of spiritual people and you learn this art, then it becomes very easy. First of all, journaling can help you to plan things and then not only making a to do list, but also to be list. What I want to be, I want to be determined. I want to be grateful. I want to be kind hearted. I want to be open minded. Journaling is such a powerful technique, and throughout my sessions of Gita, I'm going to employ this technique with you. Therefore, today also, it's very auspicious that you have asked this question, because today we are not just going to sit idle, that okay, you are going to listen to me explaining something and I'm going to speak like your Delhi University professors. You are going to write something with me throughout each slide. We are going to do journaling side by side. So I request all of you to bring something to write right now. You can even write on your phones, in your notes app or something, but you must write something. And it brings me to the attention. I explained to you journaling, and maybe I can revise it for you, Keshav, right? That will be helpful. Okay, before starting our Bhagavad Gita, what we do is we offer prayers of gratitude. This knowledge, we understand that it's not our own knowledge, it's the knowledge we have received from our spiritual teachers. It's the knowledge which is not only understood on the intelligence level, on the intellect, on the IQ. We understand that this knowledge goes deep into the heart. Then it brings transformation in the character. Therefore, we recite this prayer of gratitude. Join me in this prayer of gratitude in the Sanskrit verse which I recite. Very easy and very powerful. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः
I offer respect unto my spiritual teachers who have opened my eyes, which were blinded by the darkness of ignorance, with the torchlight of knowledge. One thing I want to share with you, my dear friends, that okay, what's happening? That this knowledge is not like other knowledge in the books which we have studied. आपने साइंस की बुक्स पढ़ी हैं, आपने मैथ्स की बुक्स पढ़ी हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, सॉरी 11, 12 में शायद कुछ लोगों ने पढ़ी, बट 10 तक सब पढ़ते आ रहे हैं, एसएसटी पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सब्जेक्ट्स पढ़ते आ रहे हैं. यू आर गेनिंग मेनी मेनी नॉलेज, but this knowledge is not like that knowledge. Why? Okay, the first thing is that you can say that okay, we'll talk about that digital prasada. Today is only Mukha Prasadat. Prasadat Padmanabhasya. We are going to get the prasad of Krishna's lotus words. Thing is, uh, see, I got distracted. uh, Avoid this. Otherwise, I will miss the point which I'm going to make. Krishna. Okay. क्या कह रहा था मैं? Sorry, I got distracted. I was sharing. क्या कह रहा था मैं आप लोगों से? मैं पॉइंट क्या था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था? Okay. Yeah. I told you ना कि dear friends, this knowledge is not only a bookish knowledge. Bookish knowledge कैसी होती है? ध्यान से देखना. Bookish knowledge is that with time it is like linear. The more you learn, the more information you have to collect. Right? ऐसे ही होता है. From the small little age to the more advanced age, you are, as the time is passing by, you are collecting more information. ऐसा ही होता है, बताओ. जी सर. This is material learning. एग्जाम्पल दे सकते हैं कोई मटेरियल लर्निंग का अपनी लाइफ से जो आपने पढ़ा हो? कोई दे सकता है? चलो मैं एक देता हूं, फिर आप भी दो मुझे, ठीक है? आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि नंबर्स के अलावा क्या एक चीज होती है? वेरिएबल्स. पढ़ा? एक्स, वाई, जेड, है ना? फिर आप उस ग्राफ से और आगे गए, आपने क्या पढ़ा? वेरिएबल्स की क्या बन सकती है? इक्वेशंस. इसे आप क्या कहते हैं? वेरिएबल. एल्जेब्रिक इक्वेशन. सुना? देन आपने फिर सुना कि इक्वेशंस की क्या बन सकती है? अलग अलग डिग्री. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ डिग्री 2. सुना आप लोगों ने? हरे कृष्णा. बताओ. कृष्णा. यस सर. थैंक यू. प्लीज कीप स्पीकिंग. हाँ, लेकिन स्पिरिचुअल लर्निंग कैसी है? तो आप मटेरियल लर्निंग देख पा रहे हैं टाइम के साथ कैसी, इसका ग्राफ कैसा जा रहा है टाइम के साथ? बताओ. चेंज हो रहा है सर. चेंज. हाँ, और ये ग्राफ कैसा जा रहा है? ये ग्राफ कैसा है? बढ़ रहा है. बढ़ रहा है. लीनियर, राइट? है ना? यस सर. यस सर. लेकिन स्पिरिचुअल लर्निंग कैसी है? स्पिरिचुअल लर्निंग इज लाइक अ स्पाइरल. अब ये आपने देखा होगा. इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना ये, और ये ध्यान से समझना. दैट मीन्स जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो, आप इस पॉइंट पे हो अभी,
ठीक है. एंड देन विथ पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ क्या होता है, आप आगे बढ़ते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो, और आप कहाँ जा रहे हो एट द एंड, कहाँ जा रहे हो, कहाँ पहुंच गए हम. We reach the center of spiral, and that center of spiral is Krishna. In other words, in spiritual learning, you are always having a fixed, क्या है fix? Destination. Yes, fixed destination, or we can say as fixed center, है ना. Go. तो इसीलिए Yes, sir. जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, अभी हम इस स्टेज पे हैं, अभी हम ना इस स्टेज पे हैं, अभी हमें मंत्रा मेडिटेशन के बारे में पता लगा, अभी हम उस माइंड को फोकस कर रहे हैं. विथ पैसेज ऑफ टाइम यू विल रियलाइज द ट्रूथ इज वेरी सिंपल, द ट्रूथ इज वेरी सिंपल, इट्स नॉट दैट मच कॉम्प्लेक्स. As you will get closer to the center, you will realize what is the truth of life. Therefore, in material learning, you go away from the origin, and in spiritual learning you go closer to Krishna. Therefore, spiritual learning requires blessings. Without blessings there can be a no self-made saint. In history there is no self-made saint who was made by his own self. अपने आप उसके दिल में एक प्रकट हो गया, पहाड़ पे गया, एंड उसको ऐसी अनुभूति हुई कि वो तो भाई उसे पता चल गया. अल्टीमेटली क्या पता लगता है ऐसे लोगों को कि मैं ही भगवान हूँ. दे से आई एम गॉड. This is not good, this is not right, this is incorrect. Those who are genuine followers of spiritual path, they realize that it were the blessings. Therefore this prayer of gratitude is very important. Why? Because it reminds us that this knowledge is not only based on intellect, but it goes deep into the heart. And in the heart you will realize that it will go deep inside your heart, and Krishna will become the center of your life. That is the success. Therefore we need blessings, and in every session I recite this gratitude prayer to remind all of us this, that spiritual learning will not be only about information. Spiritual learning is about getting closer to Krishna. हम ज्ञानी पंडित नहीं बनना चाहते. एक बार क्या हुआ, बनारस में हम गए, और एक विद्वान पंडित थे, और वो विद्वान पंडित बहुत ही बड़े बड़े शास्त्र उपनिषद पढ़ के बैठे हैं. बनारस में आप लोग गए, देखा आपने, बहुत बड़े बड़े पंडित लोग बैठे हैं. मैं बनारस से हूँ. अब बनारस से रवि जानते होंगे, है ना. बहुत पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं लोग, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, ध्यान योग समाधि सब कुछ पढ़ते हैं. लेकिन रवि को पता होगा, लोग इतना कुछ पढ़ने के बाद ये सिंपल सी चीज नहीं समझ पाते कि पान खाना गलत है, इंटॉक्सिकेशन गलत जी है ना. सर. हम्म. Therefore, this knowledge is not only about the verses and information. This knowledge is also. Just a second, na? Just a second. Give me a second. Uh, okay. Sorry for that. It was a very urgent call. Let's move on, my dear friends. So now there is a journaling question in your life. Now write down. I'm giving you a question to write down.
Did you find any incident in your life which revealed to you that spiritual learning was very simple? Write down that incident in your life जहां आपको पता लग गया ये तो बहुत सिंपल था, but it is very deep. I want you to write that down. Write that incident in your life which revealed to you that spiritual learning is very simple. It must have been there. आपकी लाइफ में पक्का कभी ना कुछ तो हुआ होगा. Maybe it was a prayer. Maybe it was a small act of kindness. It was simple. That incident may be simple, but it must be deep, right? Write that down. Let the pen flow. Let the hands flow when you are writing. Become the Vyasadev of your life. Vyasadev incarnation has came only to write. And I want all of you on this call to become Vyasadev. Write that down. लिखा आप लोगों ने सबने लिखिए. It could be anything simple. Doesn't have to be complex. Whatever comes in your mind, maybe in past 1 week, maybe anything. किसी ने लिख लिया तो बताना. I am also writing. I had made my journal on my OneNote app. लिखा रवि? Okay, now Yes, sir. share that one quality or that simple truth related to that incident. You don't have to share the whole incident. Just share what was that simple thing which you found out. वो simple सा truth था क्या which you discovered? Act of kindness, gratitude, prayer, prashadam, anything. Yes, Ravi. Compassion. 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 Very good. Ravi. It's Ravi, right? Yes, sir. Keshav. Okay, Keshav. Keshav, you said compassion. Good. Ravi, what's your word? Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. It's very simple actually. It isn't that much difficult. Uh, Requires a requires a very simple heart to I can understand. Yes, Ravi. बताओ क्या कह रहे हो? जब मैंने 7th स्टैंडर्ड में शुरू किया था गीता पढ़ना, तो 11th चैप्टर में भगवान कृष्ण शायद कहते हैं अर्जुन से कि जो दुनिया में मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें एक पीपल के वृक्ष से तुलना करते हैं कि वो जैसे एक पीपल का वृक्ष एक सिंपल वृक्ष है, वो पत्तों को पानी देते हैं, उसी तरह वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और अगर जड़ को पानी देते हैं मतलब मेरी पूजा करते हैं, एक तरह से मिला के वो मेरी ही सेवा करते हैं. Yes. Therefore, you can call this as that a simple essence. Krishna is the essence, a very simple essence. Right. Good. Rahul, let's hear from you. Rahul, your word. Anand. Bliss, Anand. Everyone is looking for Anand, right?
Yes, good. Prince, what you wrote in journal, that quality? Prince Kumar Shah. Yes. मीन्स मुझे तो स्पिरिचुअल लर्निंग ज्यादा इजी जब लगी जब मैंने धीरा ज्वाइन किया और समझने की मतलब समझा, तो तब से ही लग रही है easy। So I think we can relate this incident as clarity, right? We हाँ, can क्लैरिटी। term this as clarity. Good, good, very good. Yes, Piyush Kumar Modhu. What's your word, Madhu? सर मेरा वर्ड हैप्पीनेस था। वो तो Happiness, bliss. हाँ। Good. Okay, nice, nice. Good, 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 good. Anyone else would like to share? आप में से कोई और शेयर करना चाहेगा from the seniors? हरे कृष्ण प्रभु। Yes, Saurabh Pro. Yes. Any word you'd प्रभु like जी to share? मेरा प्रभु जी मेरा था क्लैरिटी। जब मैंने प्रभुपाद की बुक्स को मतलब डिस्कवर किया था, तब क्लैरिटी मिली थी कि कृष्णा के बारे में, और हमारा पर्पस क्या है, गोल क्या है लाइफ में। Goals, yes. What's the real goal, right? Without a goal, life is goal. Yes. So, see, can you see the truth is very simple, right? But with blessings it comes, right? So, can we move forward? See, everywhere we are going to do journaling. Okay. So, मैंने भी एक वर्ड लिखा है। मेरे लिए क्या वर्ड था? प्रेयर्स। इसका एक पीछे बहुत अच्छा इंसिडेंट भी है। टाइम मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा वो इंसिडेंट क्या है। ठीक है, बहुत अच्छा इंसिडेंट है। मैं भी शेयर कर सकता हूँ मैं, अगर आप अलाउ करें, इफ वी हैव टाइम। कृष्णा, या बाद में करते हैं कभी, जैसे आप लोग कहेंगे वैसे कर लेते हैं। आगे बढ़े। कर दो सर शेयर। प्रभु जी बता दो। अच्छा, चलो बताते हैं। ठीक है, देखो, टाइम इज लिमिटेड। डोंट ब्लेम मी कि सर बहुत हो गया, जल्दी करो, वहां मम्मी बुला रही है। खाना लग गया। ऑब्वियसली डिनर आपका रोकेंगे नहीं, डिनर करने जाना है, तो सबको करना है। ठीक है, तो एक इंसिडेंट है छोटा सा। आई वॉज कमिंग फ्रॉम सत्या निकेतन, है ना, मेट्रो स्टेशन, बिकॉज आई लिव नियर बाय दैट प्लेस। And matlab, I'm not in Satya, but that road which comes from Satya, that comes to Vasant enclave side. So one one man came, and he was, asking for donations for uh, children, orphanage children, and he asked for donations. And then uh, I told him, see, my all money is spent in services for Krishna. Right now, whatever money I have divided my money, and some part of money goes to family, some part of money goes to services for Krishna, and some part goes to rent. And for myself also, I don't have even my pocket money. What to speak of giving donation? But I won't ignore you. Yes. Sometimes we have a habit of ignoring people, जिनके पास से आप जा रहे हैं, जस्ट इग्नोर देम कि कोई पकड़ ना ले मुझे, है ना, बगल से निकल जाओ, टाइम बच जाएगा। आई डोंट हैव दिस हैबिट ऑफ इग्नोरिंग, बिकॉज इट मे बी अ जेन्युइन or maybe a non-genuine cause, but I can do a genuine act. What act I did? I i asked for that. I asked his hand, and then I chanted the Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And then he asked me, ये क्या कर रहे थे? I told him that my money can be unlimited, but if Krishna wants, Krishna can give you unlimited money, because Krishna is Lakshmi Pati. He has all the money. And if Krishna finds you genuine, Krishna will definitely do something. So I'm not ignoring you, but I'm praying for you. And that if you have a genuine cause, then help may come.
And believe me, Krishna is most more powerful than our income, more powerful than money of this whole world. So, what lesson I got in that incident? Always pray. That sensitivity of a saint. A saint is never insensitive to others. So, yeah, that was my incident, and the word was prayers. ठीक है? I hope आप लोगों को अच्छा लगा. I felt very nice. Krishna sends me some nice incidents. Okay, so we did mantra meditation, and now I told you about this also, right? The two purposes of writing. क्या है writing के purposes? क्या सिर्फ thoughts को express करना? No. Discover thought. Yes, to discover the thoughts. We are not even aware of our thoughts, of what our mind thinks. मैंने आपको भी एक इंसिडेंट बताया. How many of you have observed this incident in your life? कभी किया आप लोगों ने ऑब्जर्व कि इग्नोर पीपल, दोज हु आस्क फॉर हेल्प? कभी किया ऑब्जर्व? Yes, sir. And I'm not saying you should give money to everyone. No. But we should have a helping nature. At least we can pray for them. That's what a spiritualist means. Okay? So what is happening in life? That the mind and senses, ये इतने ज्यादा वो है ना, चुलबुल है ना. आप लोगों ने दबंग मूवी भी देखी है, चुलबुल पांडे. ये दोनों चुलबुल पांडे के दो बच्चे हैं. ये माइंड एंड सेंसेस क्या होते हैं? दे रिएक्ट इम्पल्सिवली. व्हाट इज देयर फंक्शन? दे रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली. अभी गरम गरम मोमोज आ जाए आपके सामने, तो आपका मन क्या करेगा? कैमरा ऑफ करते हैं, मेयोनीज लेके आते हैं और एक मुंह में डालते हैं और सर को फिर सुनते हैं, है ना. ये कौन कर रहा है? ये रिएक्शन कौन दे रहा है? द कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड एंड सेंसेस. बट द सोल एंड इंटेलिजेंस, they do not react. They want to respond. They want to think deliberately. No, no, I'm learning Bhagavad Gita. It can wait for 5 minutes. It's fine. Right? So there is in our heart a reflective self. जैसे आपने एग्जांपल दिया केशव, है ना, कि माइंड क्या कहता है? माइंड कहता है कि अभी छोड़ देते हैं, अभी पोस्टपोन कर देते हैं, एंड बाद में रिग्रेट होता है ना. तो इम्पल्सिव सेल्फ ने क्या कहा? पोस्टपोन करो. लेकिन रिफ्लेक्टिव सेल्फ ने क्या कहा? व्हाई बी पोस्टपोन्ड? इट्स नॉट गुड. Therefore there is a difference between reflective self and impulsive self. And what journaling will do is it will act as a dialogue between the two self. It will make a bridge. You will observe yourself. Okay, this is my mind. My mind says this. My mind likes this. I can give you a practical example how I have discovered many things about my mind. Generally, in the evening time, if I don't take a shower, I have felt my mind has a 50% less productivity. Because generally the mind is drained with thoughts, with the negative energy. It's in Sanskrit it is called as tamo guna. And when I take a shower, immediately it comes alive. In morning also it happens. है ना? In morning, when the alarm clock goes on, there are three kinds of responses of people. जब alarm बजता है, पहला response क्या होता है? पहला response क्या होता है? ये दूसरा होता है. पहला response होता है to not hear the alarm clock. It keeps on ringing and you don't hear the alarm clock. ऐसा कभी हुआ? ऐसा देखा आपने? What is the second response? The second response is to find that favorite button, that snooze button, है ना? Snooze. Or sometimes even switch off the mobile. And the third response is कि ऑस्टेरिटी करते हुए, मन को मारते हुए उस अलार्म को बंद करके उठ जाना. Therefore, an alarm clock goes off, I say 3 words to myself every day. 3 words. Rise up,
dress up, show up. This is my motto. When the alarm goes off ना, मैं अपने माइंड को हमेशा याद दिलाता हूँ कि हमने डिसाइड किया है, माइंड, वी हैव डिसाइडेड, वी विल राइज अप, वी विल ड्रेस अप एंड विल शो अप. Where we will show up? We'll show up for chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. It's a struggle. It's a struggle, but it's a learning. I'm glad I'm gradually trying to find the path. See, wisdom सिर्फ हमारे ना लेक्चर्स में नहीं होना चाहिए. विजडम हमारे सिर्फ टॉक्स या सेशंस में नहीं होना चाहिए. विजडम हमारी दीवारों पे लगा होना चाहिए. विजडम हमारे माइंड में होना चाहिए. ये लाइंस जो हम सुनते हैं, ये लाइंस हमें अपने दिल में बिठानी चाहिए. all the successful people all the successful people, they keep on learning. They keep on learning. What are the two most common habits of highly successful people? The two most common habits, even Stephen Covey mentions. The first habit is they rise early in the morning. Knowledge. They rise early in the morning. And the second, yes, you're right, Keshav, they read books. They read books. This is the habit of all the highly successful people. And Krishna mentions this in Bhagavad Gita. They have taken from there. Krishna mentions in 17th chapter, Swadhyaya. A successful spiritualist is interested in Swadhyaya. That means he reads, he understands, he churns the knowledge. And then Krishna also says that he is very austere. He rises early in the morning. Shamenacha Damenacha. He controls his senses and rises early. So, therefore, journaling is so powerful because by writing, you are not only expressing thoughts, but you are also discovering thoughts in your life. You are building your consciousness. You are building your consciousness. Believe me, have a journal in life. If you don't have a journal, then I'm sorry to say, life is 50% waste. Let me show you today. Today I'm going to do something. I'm going to show you a portion of my journal. It's a private journal, but because I want to, inspire you, I want you to, कि journal होता कैसा है, पता लगे. So I'm going to show you a portion of my journal. Let me see if I can open in my laptop. Okay, now I can open it. Krishna. Okay. See, every experience teaches. Every day we can learn something. Realizations are coming every day. It's not, they will come only at the mountain. So sharing the screen should be done. This is done. I hope आप में से कोई हैकर नहीं है जो मेरा जर्नल हैक करके पढ़ ले. I don't want anyone to read everything. Because I am honest here with myself, right? I am completely honest with myself, and okay, there is not much. ऐसा कुछ है भी नहीं ज़्यादा, Hmm. Okay, let me show you. मैं अब देखता हूँ कौन सा वाला आपको दिखाना चाहिए. Okay, I wrote this journal on 13th August 2023. आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे, and I'm reading the journal for you, ठीक है? I'm traveling in train, passing and watching different places on the way. यानी मैं कहाँ बैठा हूँ? खिड़की पे, जो बहुत अच्छी लगती है, खिड़की वाली सीट, है ना? No wonder people like to stare through the windows because they want their mind to be captured by outside beauty. नेचर को देखना, है ना? खेत देखना, पेड़ देखना, इवन कुछ भी बाहर देखना, बस ऐसा लगता है ये फिल्म की टिकट से कम नहीं है ना? खिड़की वाली सीट का. But as a spiritual practitioner, we understand the risk of giving a loose end to the mind may be problematic. कई बार हम पूरे पूरे दिन ट्रेन में खिड़की से बाहर ही देखते रह गए और शायद हम कुछ कर सकते थे अच्छा. So it is, खिड़की पे सिर्फ देखते रहना, it is like a loose end.
ये मैं अपने आप को कह रहा हूँ, आई एम टॉकिंग विद माई सेल्फ. बट नेवरदलेस सीइंग इज बिलीविंग एंड कैप्चरिंग टू अस. लेकिन देखना अच्छा लगता है, एंड देखना से लगता है कि हम उस चीज को जी रहे हैं. सीइंग इज बिलीविंग. दिस ब्रिंग्स मी टू रिफ्लेक्ट ऑन द थीम दैट व्हाई कांट आई सी कृष्णा. सो मैंने ये देखने वाली एक्टिविटी को ना, खिड़की के बाहर नजारे देखने वाली एक्टिविटी को, इसको मैंने एक टॉपिक से कनेक्ट कर दिया. व्हाई कांट आई सी कृष्णा राइट नाउ. एंड देन आई चर्नड द फिलोसफी, जो जो मैंने पढ़ी है, आई चर्नड द फिलोसफी इन डिफरेंट पैराग्राफ्स. एंड दिस इज द कंक्लूजन आई केम टू. मैं इस कंक्लूजन पे आ गया. व्हाट इज द कंक्लूजन? The last and final conclusion is that I am not seeing Krishna, but Krishna sees me. My goal is to develop lalasa. In Sanskrit, lalasa is the word for greed. My goal is to develop greed to see Krishna directly. And if he likes, he can see me because he is the seer. The thing is, वो moment जो बस खिड़की पे देख के पास ऑन किया जा सकता था, वो moment मैंने रिफ्लेक्ट करने के ऊपर बिताया, जर्नलिंग में बिताया. And then, this is a whole lecture, a whole session I gave. Why we can't see Krishna? Everything I share with you has been solidified in my journals, has been solidified as realizations. It's not just bookish content learned, it's something which I observe. So, this is the technique. All of you should try. You don't have to become a great writer, a English writer, to journal, to write. You just need to observe. Just need to observe. And it's very simple. Therefore, I always say this to everyone. Become the Vyasadev of your life. If you want to understand Gita, if you want to make the maximum practical use of Bhagavad Gita in your life, then become the Vyasadev of your life. है ना? आप पूछ सकते हो सर जनरल में लिखेंगे क्या? This is what we can write in journal. The first part of journal can be the observations of the day. How did your day went? आपका दिन निकला कैसे? है ना? कुछ इवेंट्स लिख सकते हो अपने दिन के. जैसे मैंने बताया, मैं खिड़की के बाहर देख रहा हूँ, ट्रेन में हूँ, मुझे याद आ रहा है, अभी पता है वो ट्रेन कौन सी है. ओके, मैंने वो रिकॉर्ड किया था अपने जर्नल में. देन द सेकेंड इज ऑब्जर्वेशंस ऑफ वन ओन सेल्फ. Our own self, we can observe ourselves. Okay, how I am responding and what I responded in my journal. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है बाहर देखना. And I am also observing that should I look in outside the window or should I do something useful? What is the third aspect of journal? Observations of the world. मैंने क्या ऑब्जर्व किया वर्ल्ड के बारे में, आप बता सकते हैं कोई आप में से? आप लोगों को मैंने अभी जर्नल दिखाया. What observation I got from the world? एक लाइन लिखी मैंने उसके. Seeing is believing and capturing to the eyes. देखना जो है, देख के हमें विश्वास होता है, एंड देख के ही वो हमारी आईज को कैप्चर करता है ना? एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज observations of Krishna. How Krishna is active. If you cannot observe Krishna, it will not give you the deepest impact on your soul. Right? Therefore, ultimately, we have to connect it with Krishna. How Krishna is arranging things, how Krishna is planning. How can I connect this incident to Krishna? This is becoming the Vyasadev of your life, becoming the writer of your life. So, we'll not go into the session of Bhagavad Gita, but I'm just reminding you for journaling. So, I'll give you an exercise right now for journaling. You all want to journal with me for a few minutes? Can we do this or we can end? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I need to again share my screen. Then Krishna. Let's see if we can find some. Are you able to see the full screen? आपको full screen दिख रही है? Yes, sir. Okay. तो मैंने कुछ 4 क्वेश्चंस तैयार करे हैं.
जर्नलिंग के लिए आपको ये 4 क्वेश्चंस के बारे में लिखना है अभी। ये रहे वो 4 क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व हाउ डिड योर प्रीवियस 3 days वेंट। अब यहाँ 3 days को ना वीक कर लो, हाउ योर प्रीवियस वीक वेंट। ऑब्जर्व हाउ योर प्रीवियस वीक वेंट। कृष्णा, what happened? Okay. How your previous week went. The second question is, what were the 3 most important activities or events or things in that observation? इस ऑब्जर्वेशन को लिखो पहले, देन उसमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज कौन सी थी वो लिखो। जस्ट राइट, जस्ट राइट, यू डोंट हैव टू थिंक वेरी डीप, जस्ट राइट। जो आपको माइंड में आए वो लिखो। फ्री, इट्स कॉल्ड अ फ्री स्टाइल पेन। जस्ट राइट। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इफेक्ट बनाते हैं जर्नलिंग का। कृष्णा, क्या हो गया? Write observations of your previous week and then write the 3 most important activities or the events happened in that observation. The third question is you should write the 3 activities which you want to do, and अब टुडे को काट देना, टुडे को काट के क्या कर देना, to do in next week. This is going to be very powerful activities, my dear friends. If you learn it, this is an art. ये आपको सीखनी पड़ेगी, और उसके सीखने का तरीका क्या है, ये लिख के ही आएगी। जितना लिखोगे उतना ज्यादा समझ में आएगी ये आर्ट। लिखो, अपना पेन चलने दो, अपने हाथ चलने दो। There is no right or wrong in journal, just write. And the last question, which is most important, is how will these activities जो आपने लिखी थर्ड क्वेश्चन में contribute in your spiritual life, in your spiritual journey? If you can write all these 4, then let me know.
आई होप आप सब लिख रहे हैं और आप सब अपनी जर्नल पे कंटेम्पलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर। यस मधु, लिख रहे हो? यस सर। हाँ सर, ओके हो गया। ओके। अगर आपने इन चारों क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हैं अपने जर्नल में, देन सर्कल द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन दैट जर्नल। इस पूरे जर्नल में सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 वर्ड्स हैं आज के, उनको सर्कल करिए, उन पे गोला लगाइए। डन? एनीवन डन? यस सर। गुड गुड गुड। लेट्स गिव सम टाइम टू अदर्स। I told you this Bhagavad Gita class is going to be very, very practical. Very, very practical. Doesn't okay, we are currently 8 participants. So okay. So if you have written your journal, then I'm going to do something. I'm going to put you in a breakout room and I'm giving you the chance to share your journal. Okay? You have to share your journal and among yourself. आपकी स्क्रीन पे ब्रेकआउट रूम का ऑप्शन आ रहा है, उसको ज्वाइन करिए और आपस में शेयर करिए वो 3 वर्ड्स और इस एक्सरसाइज से आपको क्या बेनिफिट मिला। ठीक है, ज्वाइन करिए ब्रेकआउट रूम को और फिर वापस आते हैं। प्रिंस, सौरभ, राहुल ज्वाइन कर सकते हैं। सौरभ प्रभु आप भी ज्वाइन कर सकते हैं ब्रेकआउट रूम प्रिंस के साथ। हरे कृष्णा। सौरभ प्रभु, मेरी आवाज आ रही? हरे कृष्णा। सौरभ प्रभु, कैन यू हियर मी? ओके। यस प्रिंस, हरे कृष्णा। आई एम योर पार्टनर इन दिस रूम। हरे कृष्णा। यस प्रिंस। आपका वीडियो ऑफ हो गया अचानक से, अच्छा लग रहा था। हाँ। यस प्रिंस, बताओ आपने अपने जर्नल में वो 3 वर्ड्स क्या डिस्कवर किए? तो मतलब मैं तो पहले ज्यादा लिखा नहीं है क्योंकि, और 3 वर्ड्स में पॉल्यूशन है फर्स्ट तो, जो हम्म। मैंने ऑब्जर्व करा। और सेकंड वन इज कि हमने रीडिफाइनिंग जो क्लासेस में पढ़ा था वो मेरी लाइफ में मतलब ज्यादा ऑब्जर्विंग था नहीं, क्योंकि यूजुअली हाँ जो वीक में चलता है जाना और आना, हाँ कुछ सीखना नया, बस वही हाँ। होता है। और बस वही हमने भगवत गीता का सेशन जो लिया था उसमें कुछ अच्छे वर्ड सीखने को मिले, रीडिफाइनिंग सक्सेस एंड चैप्टर्स समथिंग एल्स। एंड मैं वही गीता को मतलब विजडम को अप्लाई करना चाहूंगा अपनी लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ वाओ में। नाइस। आई थिंक आपने वो मैसेज डाला था, वो व्हाट व्हाई एंड हाउ वाला, वो किसने डाला था? आपने डाला था, हाँ। है ना हाँ, वो? मैंने डाला। आई थिंक वो आपको जो भगवत गीता की
मतलब I see you that you have more side of inquisitive Arjuna, जो हमने डिस्कस किया था ना, दो साइड्स हैं चैप्टर 1 में। कौन कौन सी थी? एक तो हाँ, एम्बिशियस, एम्बिश एम्बिशियस धृतराष्ट्र एंड और दूसरी, इंक्विजिटिव अर्जुना। हाँ इंक्विजिटिव अर्जुना। हाँ, यस यस यस। तो आप में इंक्विजिटिव अर्जुना काफी है और अच्छा है। आपकी वीडियो भी हमने कंपाइल कर ली है, एंड वो जस्ट मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। हम लोगों ने वो जो आपकी वीडियोस नहीं ली थी, एक बड़ी अच्छी वीडियो कंपाइल करी है, वो हाँ अभी वो वो थोड़ी सी इन प्रोग्रेस में है, थोड़ा सा अच्छा। उसको टच दे रहे हैं, बट उसकी बहुत अच्छी वीडियो हमारे आपके ही सीनियर भावेश भावेश है ना, वो मल्टी टास्क करते हैं, वो तो हर हाँ, चीजों में एक्सपर्ट है। तो फुल भावेश एक्टिव। सर, हाँ बहुत एक्टिव, he is the management head, he is the creative head, video head, and he is personal also very, डीलिंग्स में भी बहुत पर्सनल है, पढ़ाई में भी he is preparing for UPSC, he manages his time nicely. So yeah, and I'm hoping कि आपको ये भगवद गीता जो हम जिस तरीके से भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ बुक स्टडी नहीं कर रहे, ये आपको अच्छा लग रहा है, हाँ, समझ अपीलिंग रहे हैं, है। अप्लाई कर रहे हैं कुछ। अच्छा। आ, मैंने भी कितना सुना था कि ना, ये वर्ड किम अकुर्वत संजय, जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पढ़ता कि धृतराष्ट्र ने पूछा, मेरे मेरे पुत्रों ने क्या किया, बट हाँ, बाट विल बी। नाउ वी आर अर्निंग ये व्हाट का मीनिंग क्या है, व्हाट डिड दे डू का मीनिंग कृष्णा क्यों मेंशन करवा रहे हैं गीता में, बिकॉज वी आर आल्सो लुकिंग फॉर ओनली फॉर व्हाट, नॉट फॉर व्हाई। तो आई थिंक वी आर लर्निंग भगवद गीता इन वेरी प्रैक्टिकल वे, है ना, बहुत अच्छा है। हाँ आई थिंक ये लीव होने वाला है शायद अभी, आई हाँ, थिंक 30 मेरे, सेकंड, 30 सेकंड्स में। तो ब्रेकआउट रूम में लीव कर सकते हैं, आई थिंक ना, वो अच्छा रहेगा, फिर हम वहीं पे भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ। हम्म। ओके, वी आर बैक, यस यस वी आर बैक। ओके यस भावेश प्रो, एंड यस वी हैव प्रिंस, प्रिंस के साथ मेरी डिस्कशन हुई अच्छी, एंड राहुल, आई होप, ओके वी जी आर भाई। बैक, केशव इज हियर, राहुल, हाँ भैया। इज दिस राहुल जी भाई। फ्रॉम, यस 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 राहुल, ओके ओके। So yes, how was the discussion, my dear friends? सर पूरा हुआ ही नहीं। पूरा हुआ ही नहीं? Okay, okay. Sorry, time was limited. That's why I had to जी make it सर। very short. So, can you share those three words which you discussed among yourselves? What were the three words? मेन इम्पोर्टेंट Yes, three circled words. जो आप लोग, वर्किंग, लाइक वर्किंग प्रॉपरली लाइफ में, लाइक जो भी काम करना ढंग से करना, yes, yes. लाइक एंड देन मीटिंग न्यू पीपल Meeting new people. Wow, nice. एंड पेरेंट्स, बिकॉज मैं घर पे जा रहा हूँ अभी, तो मैं Oh, पेरेंट्स से मिलूंगा, दैट इज आल्सो वेरी yeah. इंपॉर्टेंट। Take care. Yeah. So all these three aspects you can observe, they can contribute to your spiritual life. Dealing with parents can be counted as service. Meeting new people can be counted as, inquisitiveness, making good relations. This is a very famous quote which I always remind myself. Mediate before you meditate. We must mediate our relationships before we start meditating. Otherwise, our meditation will be only on solving those problems among relations in our family, in our relatives. Yeah, good. Any other? Any other Dhira would like to share? Any other Dhira boy would like to share? Dhira member, the three words. सर वो जो थ्री वर्ड्स है मैं सर्किल करा वो थ्री वर्ड्स है। Mm-hmm. हाँ मैंने पहला सर्कल करा प्रेयर, Prayer, सेकंड सर्कल करा क्रिएटिव क्रिएटिव रूटीन फॉर माई सेल्फ एंड routine, थर्ड yes, एजुकेशन, क्रिएट ए education. न्यू रूटीन फॉर माई Wow, good, good. सेल्फ। Nice, nice, nice. Can you see, आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो जिन जो आप लोगों ने लिखे हैं वर्ड्स? नाउ यू आर ऑब्जर्विंग द पैटर्न्स ऑफ योर लाइफ, you are able to understand the patterns and maybe break the patterns also. Yes, Bhavesh bro, you would like to also share? I can see your hand. He is the senior and he is want to share. Let's hear from Bhavesh. Yes. तीन वर्ड है, एक तो कुरुक्षेत्र कैंप,
mantra meditation and study. Yes, कुरुक्षेत्र कैंप is right on the mind of भावेश, so आप में से जिसने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो अभी कर दो, क्योंकि देखो भावेश सर के माइंड में अभी चल रहा है वो, तो डोंट लेट आई थिंक केशव यू आर लेफ्ट राइट, प्रिंस ने भी कर दिया है ना, सो प्लीज रजिस्टर। राहुल आपने किया अभी? अभी तो नहीं किया भाई। करो करो, है ना, देखो भावेश सर के माइंड में पहले वही चल रहा है ना, उनको उनकी हेल्प करनी है। यस राहुल, you'd like to also share those 3 words? Growth mindset, discipline and determination. Wow, growth mindset, determination and discipline. Yeah, जी भाई। that's very nice. It's very nice to know. So I hope you can now understand that how beautiful it is to become the Vyasdev of your life, and to write. So our every chapter of Bhagavad Gita will go along with this journaling. ये जर्नलिंग हमारा साथ का टूल रहेगा ही रहेगा। एंड जर्नलिंग पावरफुल कैसे होती है? व्हाट इज द वे टू मेक द जर्नलिंग पावरफुल? द फर्स्ट वे इज टू राइट, बट देयर इज वन अनदर फैक्टर। ग्रेजुअली यू कैन लीव जर्नलिंग, छूट जाएगी आपसे अगर आप एक चीज नहीं कर रहे होगे। वो क्या है? Honesty. Honesty, but sometimes it happens, Krishna, we are not able to lift the pen, or we sometimes ignore Consistency. it. हाँ, वो कैसे आएगी कंसिस्टेंसी? एग्जैक्टली, वो कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? That comes by mantra meditation. That comes when you chant Hare Krishna. This Hare Krishna vibration will give you the spiritual strength, वो ताकत देगी आपको जिससे आप ये टेक्निक अप्लाई कर पाओ। And those who chant regularly can journal in a spiritual and a deep way. वैसे वरना डायरी एंट्रियां तो लड़कियां भी लिखती हैं, पर हमें लड़कियों जैसा काम नहीं करना खाली कि हम खाली डायरियां ही भरते रहें। We should take learning and improve our life. We should not only prove to others in life, we should also improve in our life. So that was it from my side. Took a lot of time, took a lot of your attention and your energy and maybe many things. But that's it that I'd like to share. I really thank to all of you for the patience and tolerating so much, and tolerating your, even uh, diet. You didn't took dinner, but I hope you enjoyed our session, enjoyed our learning today, and you go along with this learning with the session which we discussed. So starting में हमने discuss किया the power of gratitude, how this knowledge, the spiritual knowledge is not linear. The spiritual knowledge is spiral. It goes deep into the heart, and the truth is very simple. At the end, we understand that Krishna is the center, right? And then we discussed also that what can be a powerful way, you know, we discussed the method of journaling, the spiritual journaling. We discussed how the mind and the senses they react, but the soul and intelligence want to respond, and how journaling can act as a dialogue. And then we journaled, हमने journaling करी, हमने apply करके देखा, and we saw some good things. So yes, I told you this technique will go on. So keep with me. भगवत गीता को मैंने पहले बताया था, प्रैक्टिकल वे में करेंगे, है ना? प्रैक्टिकल वे क्या है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना? जैसे एक टीचर ने बोला ना कि स्टूडेंट्स, if A is equals to B and B is equals to C, then A is equals to C का प्रैक्टिकल प्रूफ दो। तो स्टूडेंट ने क्या रिप्लाई दिया? मैडम, आई लव यू, यू लव योर डॉटर, देन A is equals to C, आप समझ जाओ मैडम, है ना? तो टीचर ने भी क्या, इस ये जोक यहीं पे खत्म हो जाता है, बट मैं सोच रहा था कि टीचर ने भी रिस्पॉन्स दिया होगा प्रैक्टिकल। टीचर ने क्या रिस्पॉन्स दिया होगा? टीचर ने कहा होगा कि बेटा मेरे पास है कांग्रेस का हाथ, है ना, जो आपके फेस पे भी छपेगा। ओके, दैट्स इट. I think we can end for now. Thank you very much. If someone wants to ask something, then we can
then you can ask. Otherwise, we can end for now. Let me stop.